As the assembly election date nears in the illegally occupied POK, the residents and the regional political parties have taken to streets, accusing the establishment of its involvement in the pre-poll rigging. They say the Islamabad's representatives, who are perennially absent during the wars and crisis the region suffers, have suddenly taken the center stage to manipulate the electorate. The protests are also based on the fear of losing even the nominal autonomy like Gilgit-Baltistan if Pakistan PM Imran Khan's PTI emerges victories through malpractice. In the run-up to the assembly elections scheduled for July 25th, a large number of people in the illegally occupied POK took to the streets against the Pakistan establishment. They accused Imran Khan's government of pre-poll rigging through misuse and abuse of the state machinery. They said that apart from announcing a slew of SOPs, the government has been using both cash and coercion to influence the candidates and the electorate. This particular demonstration in Kotli was to oppose the arrival of Pakistan's Minister for Kashmir Affairs, Ali Amin Khan Gandapur, who, according to the protesters, was undemocratically and illegally managing the dynamics of the scheduled polls. तो गंडापुर जो है वो मीरपुर में खड़े होके वो कह रहा है कि आप मुझे एक वोट दो, मैं एक वोट का 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा। इससे पहले गिलगित के इलेक्शन में भी उसने यही हरकत की और अब वो यहाँ आकर वो कश्मीरियों की भी तजलील कर रहा है, वो जमहूरियत की तजलील कर रहा है और वो ये साबित कर रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन एक मखसूस जमात को और एक मखसूस टोले को जितवाने के लिए और अपनी मर्जी का एजेंडा जो है वो मुसल्लत करने के लिए यहाँ करवाए जा रहे हैं। इसलिए हम इस तरह के नाम नहाद जो इंतखाबात हैं जो जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ इलाके पाकिस्तान के हामियों को हिस्सा लेने की इजाज़त है और जिनको एजेंसियाँ क्लियर करती हैं उनको हिस्सा लेने की इजाज़त है, हम उनको टोटली मुस्तरद करते हैं। ये फ्रॉड इलेक्शन है। While calling political parties promises, trickery and facade, the protesters said that the successive governments in Islamabad have done nothing except economically exploiting the region and suppressing the rights of the individuals who live there. Elections virtually held under the barrel of a gun have only emboldened them. Even the composition of the assembly has been such that Islamabad always has a way to install its stooges. While it has the right to select and send a few members, others who come through the so-called electoral process are allowed to contest only after proving their allegiance to Islamabad. इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि वो इस चीज़ पे ख़ास कर जो है वो नज़र रखें कि ये जो पाकिस्तान के वज़ीर यहाँ आकर एक मुतनाज़िया इलाके में एक मखसूस पार्टी की मखसूस उम्मीदवारों की कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि फ़लाँ आदमी वज़ीर आज़म है और आप उसके साथ हो जाएं और फ़लाँ जीतेगा आप उसके साथ हो जाएं। ये कोई इलेक्शन नहीं है, टोटली हम इसको मुस्तरद करते हैं और हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शंस के बजाय यहाँ से फ़ौजों को निकाला जाए, यहाँ राय शुमारी करवाई जाए ताकि इस मसले का कोई हल हो सके। People in Pakistan-occupied Kashmir say that Islamabad is planning something sinister in the coming days. It could come on similar lines to what Gilgit-Baltistan witnessed a few months back, where it passed a resolution declaring it a province of Pakistan. And that happened despite the fact that UN resolutions do not give it such jurisdiction over the region. That happened despite locals and India's the real owner by virtue of instrument of accession signed by the King of Jammu and Kashmir, strong opposition.
एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो तकसीम कश्मीर के एजेंडे पर मोहर साबित करे। यानी गिलगित से ये कोशिश की गई है, आपने देखा कि वहाँ असम्बली से ये करारदाद मंजूर करवाई गई कि जी इसको सूबा बनाया जाए। अब इस असम्बली से भी एक करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। Today's Pakistan-occupied region was part of British India until 1947, when Maharaja Hari Singh would rule the undivided state of Jammu and Kashmir. And through an instrument of accession signed in October 1947, he decided to be a part of India. However, a rattled Pakistan with the help of mercenaries attacked the then militarily ill-equipped state of Jammu and Kashmir. By the time Indian forces landed there, it had occupied large swathes of territories that continue to endure its occupation and second-class treatment.